Resuming with the second part of the worksheet series that we started, so mensuration की ये second part है video का. In this question, they're asking us, they've given us a radius, cone of radius 6 and a slant height L. Total surface area of the cone is 84 pi. You have to show that the value of L is 8. How will we do this, Essen? The total surface area they're saying is 84 pi. We will put pi r L plus pi r square is equal to 84 pi. अच्छा, pi r L plus pi r square is equals to 84. Yes, because it's a circular base. Okay, shabash. The circular base is represented by this. The curved part is represented by this. What do we do now? It's equal to 84 pi, Uh-huh. not 84. So, are we going to plug in the values? Yes. Radius is 6. We will put the radius as 6 in both. ठीक है. So that becomes 6 pi L plus 36 pi is equals to 84 pi. And 6 pi L is equals to 84 minus 36 is how much? 48. 48 pi. And now we're going to simply cut out pi from both sides, and L is equals to 48 divided by 6, which comes out to be 8. 8. ऑलराइट परफेक्ट. वॉल्यूम ऑफ द कोन है, उसका क्या फॉर्मूला है और वो कैसे करेंगे? They've given the formula 1 over 3 Pi pi r r square square h. h. Okay. And the value of pi is going to be from the calculator. R is how much? R is 6. And do we have the height? No, we're gonna find the height through Pythagoras theorem. Okay. So let me drop a line from the vertex till the base. The value of L is 8. How much is the height going to be? We will find through Pythagoras theorem. Okay, 8 square minus 6 square whole under root, it comes out to be? 28 square root of 28 and then 5.29. So let's just keep it as square root of 28 and the calculator can handle the rest of it. Square root of 28, we plug that in. What do we get as the final answer for volume? 199.43. 199.43. And after you round it off, it should become 200. 200. Three significant figures. So let us quickly confirm this. And let's see if we have the correct answer. Hold on. This is mensuration, right? Yes. Yep, mensuration mark scheme. Question number 8 B part. 8B part. 199 would have worked too, and 200 is perfectly fine as well. Part C says the cone similar cone has a total surface area of 47.25 pi. Radius of this cone. We will use the formula A1 over A2 is equal to L1 over L2 whole square. ठीक है. और ये बताओ कि जो पहली कोन थी वो जो हमारी इनिशियल क्वेश्चन में बनी थी वो इज दैट द बिगर कोन और इज दिस द न्यू वन द बिगर कोन? The older is the bigger तो वो cone. उसका सर्फेस एरिया कितना था? 84 pi. 84 पाई. और इसका है 47.25 पाई. ठीक है. तो शुड वी प्लग दिस वैल्यूज इन ओवर हेयर? Yes. 84 pi over 47.25, sorry, 47.25 pi. And what is the value? What are we going to use for L1 and L2? L1 will be 6 because the radius of the L1 older pi is is 6 and shabash. the new we have to find. This was 6, and we have to find the radius of this. So L1 Yes. over L2 or square. So if we solve this, what do we get? What's the radius? 4.5. L2 would come out to be 4.5. Exact 4.5 या पहले कोई और वैल्यू आई थी? Exact. Okay, let's confirm that. Perfect, perfect. We have a new shape over here. This kind of a shape is called a compound shape. A compound shape is a shape made up of two or more basic shapes. So we have a cylinder plus a hemisphere. We're supposed to find the volume of the hemisphere. No, we're supposed to find the radius of the hemisphere and show that it is equal to 7.86. How will we do this? They've given us the formulas of the volume. Uh huh. We will put
They're saying that the volume of the hemisphere is equal to the volume of the cylinder, so 2 over 3 pi r cube is equal to pi r square h. 2 over 3 pi r cube is equals to pi r square h. A pi r square h is the volume of the cylinder. 4 over 3 became a 2 over 3 pi r cube. Why? Because it is a semi hemisphere. ये पूरा सर्कल नहीं है. It's only half. Since it's only half, तो इसका हम 4 की जगह 2 लिखेंगे. अब what do we do? We plug in the values. Yes. How much is the radius for the hemisphere? We have to find Oh, the okay. hemisphere. End of the cylinder, its diameter divided by 2, which is 4.5. 4.5 इसका half कर दिया और height कितनी है? Height is 16. So we can cut out pi from both sides. R cube is equals to 4.5 square into 16 into 3 or divided by 2. This 3 goes over there, it gets multiplied. This 2 comes over here and gets divided. What do we end up with? What is the value of R? 7.86. 7.86. That's after rounding off, no? Yes, after. पहले क्या था? Any idea? 7.8622. 7.8622 और उसको जब राउंड ऑफ किया then you're going to say कि जी after rounding off to two decimal places it becomes 7.86. Good stuff. Calculate the total surface area of the solid. अब surface area की definition जिस समय आपके previous भी वीडियो में बताई थी, it's all the surfaces that you can touch, paint or see. Remember that. तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जब वो कह रहे हैं तो ये आप नीचे बेस देख रहे हो जो सिलेंडर के साथ लगी हुई हेमिस्फेयर की, इसको हम काउंट नहीं करेंगे बिकॉज यू कैन नाइदर टच दैट, नाइदर पेंट दैट और नाइदर सी दैट फ्रॉम दिस करंट सिनेरियो. तो क्या इक्वेशन होगी? We can first find the surface area of the cylinder. एंड दैट कम्स आउट टू बी, आई मीन व्हाट्स द इक्वेशन गोना लुक लाइक? Oh, pi r square plus 2 pi r h. हाँ शाबाश. 2 पाई आर एच दैट गिव्स यू द कर्व्ड पार्ट Curved प्लस surface पाई area. आर स्क्वायर. अब ये यूजली इट्स 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन सिर्फ हमने इस ब्लू पार्ट का निकालना है तो हमने एक पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया विच इज़ द सर्कल. नेक्स्ट. We will plug in the values. एंड व्हाट इज इट इक्वल टू? अच्छा टोटल सर्फेस एरिया निकालना है, ठीक है. हाउ मच इज द Yes. वैल्यू ऑफ आर? 4.5. 4.5. हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ एच? 16. 16 पाई इंटू 4.5 square. शाबाश. एंड इफ एंड व्हेन यू सॉल्व दिस व्हाट डज इट बिकम? 516. एग्जैक्ट. Exact. अच्छा. Let's confirm. We have to find the total surface area. Oh, they're still left. That's just, yes, Oh, that's just the cylinder. cylinder. अब हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? We can first find the curved surface area, which would be 2 pi r square. शाबाश. तो दैट्स ओनली दिस मच. अच्छा बाय द वे जो अभी तक हम कर चुके हैं उसको शेड करते हैं. वी डन विद दिस ऑरेंज पार्ट. नाउ वी गोइंग टू सॉल्व फॉर दिस ऑरेंज पार्ट अप टिल हियर. तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर है, इसका आंसर क्या होगा? The curved surface is 1034.65. और इसकी इसके आर की वैल्यू क्या है? हेमिस्फेयर की रेडियस जो है दैट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7.8622, राइट? Yes. एंड व्हाट्स योर आंसर? 1034.65. 1034.6. Wait, that's the total. It's 388.17 of the curved surface area of hemisphere. 388.17, Yes. राइट? इसको मैं क्विकली कंफर्म भी कर लेता हूँ. मीनवाइल कैन यू एक्सप्लेन इट टू द व्यूअर्स व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू नेक्स्ट? We need to find the area of the outer circle. We will आफ्टर. subtract the हाँ yes. हाँ शाबाश. We will subtract the smaller circle from the bigger circle to find the outer circle area. ठीक है. 380, ठीक है, परफेक्ट. The तो अब आपका yes. बेसिकली जो अब मैं इसको रेड या पिंक पार्ट में मार्क कर देता हूँ, दिस इज व्हाट वी सपोज टू फाइंड नाउ. ये वाला पार्ट जो वाइट रह गया था, वी कैन सो दैट वी कैन ऐड दिस एज वेल, राइट? इसका आप कह रहे हो कि वी कैन सब्ट्रैक्ट द बिगर सर्कल फ्रॉम द स्मॉलर सर्कल. Yes. तो लेट मी इरेज दिस.
Basically, you're saying we're going to calculate the value of the bigger circle, subtract this smaller circle from it, and we'll be left with this pink part जो अब मैं shade कर रहा हूँ. So what is the area of the bigger Yes. circle? 7.86. ठीक है. पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर एक दफ़ा कैपिटल यूज़ किया है बिकॉज वो हमारे बड़े सर्कल की वैल्यू आएगी 7.86 और छोटे सर्कल की क्या वैल्यू है 4.5. 4.5 एंड सब्ट्रैक्ट दैट व्हाट डज इट बिकम 130.47. नहीं ओनली दिस सब्ट्रैक्शन वुड लीड अस टू 130 Only this, it would be 3.36. 3.36 now if we add all of these together what does that become this is what we're supposed to do right we're supposed to add up all these surface areas Yes. 907.53 is that Wait. our answer 3.36 is just the of the radius subtraction. The surface area of the outer circle will be 130.47. अच्छा 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 तो ये सिर्फ रेडियस सब्ट्रैक्शन आपने बताई तो चलो लेट्स जस्ट प्लग दिस वैल्यूज इन आप मुझे बताओ कि रेडियस की वैल्यू क्या है बड़े रेडियस की वैल्यू क्या है 7.86. 7.86 अब इसका स्क्वायर भी लेना है और आर की वैल्यू क्या है छोटे आर की 4.5. 4.5 इनको जब सब्ट्रैक्ट करो अब जो आंसर आता है दैट्स हाउ मच 3 130.47. 130.47 ठीक है अब नाउ वी आर सपोज टू ऐड थ्री वैल्यूज ये सरफेस एरिया और ये सरफेस एरिया इफ एंड व्हेन यू ऐड दीज व्हाट डज इट बिकम 1034.65. 1034.65 65 और इसको अगर हम राउंड ऑफ करें टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हाउ मच शुड दैट बी 1040. 1030. हाँ 1030 ये हमारा परफेक्ट और प्रेफर्ड आंसर आया जो पहले वाला होता है दैट्स करेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 a birthday cake is in the shape of a cylinder there are two layers of cake and one layer of icing कौन सी वाली है 12 millimeter. हाँ ये जो थिन वाली है ये 12 मिलीमीटर तो टोटल कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ आइसिंग इन द बर्थडे केक क्या फॉर्मूला या क्या तरीका होगा वॉल्यूम ऑफ It's आइसिंग a it's a small cylinder, so volume is equal to pi r square h. वेल डन पाई की वैल्यू इज फ्रॉम द कैलकुलेटर आर कितना है 10. आर इज 10 सॉरी एंड एच कितना है Uh, h is 1.2. 1.2 We सिंस will मिलीमीटर्स convert में है millimeter to हाँ शाबाश वी कन्वर्ट मिलीमीटर सेंटीमीटर्स का आंसर क्या आता है 376.99. 376.99 and if we round it off it should become 380. 377. 377 and since the question asked us to give the answer in centimeter cube तो इसलिए हमने millimeter से change किया था तो it's right in the middle of this range otherwise this would have worked too the top and curved surface area of the birthday cake are now covered with chocolate calculate the area of the birthday cake that is covered with chocolate up top or curved surface area obviously once if you pour chocolate on this where would it exactly be let's turn this into यहाँ पे इस तमाम एरिया पे साइड पे और ऊपर तो इसका एरिया इसका सारा सरफेस एरिया कैसे निकलेगा Pi r square plus the curved surface area, which is 2 pi r हाँ h. तो the circle at the top is pi r square and this curved surface area down here is going to be 2 pi r h pi r square में हमारी वैल्यू 10 है और 2 pi r में भी हमारी वैल्यू 10 है h कितना है 3 plus 3 plus 1.2, which is 7.2. 3 plus 3 plus 1.2 which is 7.2 जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो what does it become 766.55. 766.55 and if we round it off to 3SF 767 Yes. 767 that's our preferred answer once again perfect now Anil has a slice of this chocolate covered birthday cake his slice is a prism of height 7.5 and the top of the cake is a sector and that's everything else is given something that they're repeating over and over and again जो important information है कि volume इसका 200 है वो इस shape के अंदर नहीं given क्या करेंगे We know that the volume of a prism is base area into height, okay so we will equate it to 200. ठीक है वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज 200 अब बेस एरिया यहाँ पे कौन सा एरिया लेंगे
sector theta over 360 into pi r square. ठीक है, बेस एरिया वो होता है जो स्टार्ट से लेके एंड तक चेंज ना हो, जिसकी शेप चेंज ना हो। तो वो जो नीचे ट्राइंगल है ना, सॉरी नीचे जो सेक्टर है ये वाला, इसकी शेप नीचे से लेके ऊपर तक चेंज नहीं हो रही, तो उसको हम बेस एरिया लेंगे। लेट्स फाइंड आउट इट्स वैल्यू फर्स्ट, दैट्स एक्स ओवर 360 इंटू पाई Pi r आर square. स्क्वेयर। एक, डू वी हैव द वैल्यू ऑफ एक्स? We have to find x. ओ ओके, सो इसको एज इट इज़ ही लिख लें फिर। एक्स Yes. ओवर 360 इंटू आर की कितनी वैल्यू है 10.3. और हाइट कितनी है? 7.5. 7.5, हाइट ऑफ द इंटायर स्लाइस। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, 360 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा 200 इंटू 360, और यहाँ पे आके क्या क्या डिवाइड होगा, यहाँ पाई भी डिवाइड होगा, यहाँ 10.3 का स्क्वायर भी यहाँ पे आके डिवाइड होगा, और 7.5 भी इसके डिनोमिनेटर में होगा। एक्स रह जाएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स कम आउट टू बी? 28.8. 28.8। अब बिफोर राउंडिंग ऑफ या आफ्टर राउंडिंग ऑफ? Before, after rounding तो off. आप पहले क्या था? डू यू हैव द वैल्यू? 28.804. 28.804, then that rounds off to 28.8. Let's confirm that. ठीक है, that's still within our range. Alright, question number 11. This is a typical question where they're cutting off the top part of the cone and they're asking to find the volume of this bowl. ये जो ऊपर रह गया है, right? कैसे करेंगे? Subtract the volume of the smaller cone from the volume of the bigger cone. ठीक हो गया। तो स्मॉलर कोन इज फ्रॉम हेयर टिल हेयर एंड बिगर कोन इज फ्रॉम हेयर टिल हेयर। तो अगर हम उसके अंदर से ये स्मॉलर कोन का एरिया निकाल दें तो सिर्फ ये बिगर कोन ही रह जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो लेट मी राइट दैट डाउन इनटू द शेप ऑफ अ फॉर्मूला। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर कैपिटल, एंड देन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्मॉल, रिफरिंग टू अ बिगर कोन एंड स्मॉलर कोन। पाई की वैल्यू तो वही है, आर कितना है बिगर कोन का, 16. एंड हाइट, 60. and what is the value of r now? 12. 12, and height 45. 45। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो कैलकुलेटर में डाल के, आप कर सकते हो हाइट, आंसर क्या आता है वॉल्यूम का? 9299.1. 9299.1, and that gets rounded off to 9300. 9300। Let's quickly check. Zabardast, perfect। The slant height of the cone that has been removed is c centimeters. Show that c is 46.6. So what they've removed, अगर ये 45 है, can we write that this is 45? Yes. So now if we try to make a shape out of this, what sort of a shape do we form? Triangle. A triangle. And what type of a triangle? Right angle triangle. Right angle triangle। तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वैल्यू 12 है, 12 स्क्वायर प्लस 45 स्क्वायर इज इक्वल टू सी C स्क्वायर। square. एंड सी की वैल्यू अगर आप निकालो तो दैट कम्स आउट टू बी 46.57. 46.57 राउंडेड ऑफ 46.6. 46.6, एंड दैट्स व्हाट द क्वेश्चन सेड कि आपने इसकी एग्जैक्ट वैल्यू सी की बतानी है। The bowl is completely filled with water. Calculate the total surface area of the bowl that is in contact with the water. अब जो आपके पास बोल यहाँ पे गिवन है, इसको पानी से भर दिया गया है, तो लेट्स फिल इट इन विद वाटर। कौन कौन सा एरिया जो है वो इज़ इन कांटेक्ट विद द वाटर, तो कौन कौन से एरिया को हम इंक्लूड करेंगे? The base, ओके, circular base with radius 12 and the curved surface एंड द area. कर्व, व्हाई नॉट द टॉप पार्ट? It's open. इट्स ओपन। तो फॉर्मूला में हमारा आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, दैट्स द सर्कुलर बेस। व्हाट नेक्स्ट? Plus pi RL. Pi r l, but that's not a cone, remember? We will subtract the surface area of the smaller cone from the surface area of the bigger cone. So we'll write pi r l minus pi r l. Minus pi RL. So once Yes. we're using the radius for the bigger cone, and once we're using bigger means the entire cone, and once we're using the radius for the smaller cone. So can you give me the values? Pi r, First, we need to find the slant height of the bigger cone through Pythagoras अच्छा theorem. वो भी हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो लेट्स डू दैट।
स्लांट हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो हमारे पास नहीं है, वो कैसे निकलेगी? Pythagoras theorem. पाइथागोरस। ये एंटायर लेंथ 60 है, ये लेंथ 16 है, तो 16 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर इज इक्वल टू द कंप्लीट स्लांट लेंथ का स्क्वायर. एंड इफ यू सॉल्व दिस व्हाट डज इट बिकम? The answer is 62.097. 62.097. दैट्स एंटायर स्लांट लेंथ फ्रॉम हियर टिल हियर. Yes. ठीक है, Yes. 62.097. नाउ इफ यू प्लग दिस वैल्यूज इन, पाई आर स्क्वायर पाई 12 स्क्वायर प्लस अब पाई, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है? 16. 16, and the length L is 62.097 that we just found out, minus pi r L again. उसके अंदर क्या क्या डालेंगे? Radius will be 12 and slant height 46.6. स्लांट हाइट जो पहले निकली थी वो 46.6. ठीक है, क्योंकि स्लांट हाइट जो जो ये स्लांट हाइट है दैट्स फॉर द एंटायर कोन फ्रॉम हेयर टिल हेयर, और जो अभी हमने स्लांट हाइट प्लग इन की है दैट्स फॉर ओनली द पार्ट ऑफ द कोन दैट इज फ्रॉम हेयर टिल हेयर. एंड इफ यू सॉल्व दिस व्हाट डज इट बिकम? 1816.95. और इसको राउंड ऑफ करें तो 1817. 1817. आप थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ कर रहे हो कि डेसिमल प्लेसेस पे? Decimal place. डेसिमल प्लेस पे, लेकिन सिंस ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है तो शुड बी राउंडिंग ऑफ टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स. Then it will be 1820. 1820, बिकॉज आपका ये थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर है. यू लाइट लुक राइट नेक्स्ट डोर, यू सी अ 6, 6 विल राउंड 1 अप टू अ 2 और आगे 0, तो 1820. So we're done with which part was it? Part C. We have, how many questions do we have to go do more in this video? 3. 3. चलें जी. Water drips from a tap into a container which stands on a horizontal surface. तो एक बेसिक सिनेरियो है जिसमें आप क्यूबॉइड को भर रहे हो पानी से. The volume of each drop is 0.08. Calculate the change in water level caused by 400 drops. Lead. Since one drop has a volume of 0.08 centimeter cube, we can multiply it by 400 to find the total volume. ठीक है, तो 0.08 into 400 that comes out to be 32. 32. 32 centimeter cube is the volume of 400 drops. अब क्या है? We know that the formula is length into width into height ठीक है. of the cuboid volume. ठीक है. We will equate it to 32. ठीक है, तो बेसिकली अगर हमने इसको यहाँ तक पानी भर लिया है, ठीक है, तो इसमें एक ही, और इसमें ये भी पता है कि पानी कितना है, 32 है, 32 सेंटीमीटर क्यूब. तो अगर से वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट. वॉल्यूम की वैल्यू इज 32, द लेंथ इज 5, द विड्थ इज 4 और हाइट नहीं पता. तो व्हेन वी सॉल्व फॉर हाइट इट कम्स आउट टू बी 32 डिवाइड बाई 20. 30, yes, Yeah, 1.6. 1.6. And I think that's our answer to, yep. Now the question says a cuboid has a square base. The length of the base of the cuboid is y. The height of the cuboid is twice the length of the base. Total surface area of the cuboid. That's too much information at once. बारी बारी कर लेते हैं. Cuboid की square base है. So let's make that. अच्छा, that's too flat. Square base ये रही. अब next क्या है? The height of the cuboid is how much? 2y. Twice the length. हाँ, तो अगर स्क्वायर बेस है और इसकी लेंथ y है तो इसकी हाइट कितनी होगी? 2y. अब And then we have to find the height. ठीक है, अब हमने ये 3-4 लाइंस कर ली हैं. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज 360. अगर ये भी y है तो ये भी y है. इसके बेस का एरिया कितना हो गया? y स्क्वायर. और इस Yes. साइड का एरिया कितना हो गया? इस वाली का 2y into y. 2y into y which comes out to be 2y square. 2y square. If this is 2y square तो वो जो बैक पे बन रही है ये वाली साइड ये भी 2y square होगी और ये जो टॉप पे है ये भी y square होगी. Now the Yes. only thing that is left is this front shape and the one at the back. तो इनका एरिया कैसे निकलेगा? It's the same. तो ये जो है 2y ये जो square. मैंने ब्लैक में आउटलाइन कर दिया इसका एरिया कितना है? 2y square. इसका भी 2y स्क्वायर है बिकॉज ये हाइट जो है ये 2y है, ये वाली भी, और ये बेस भी y है. ये 2y स्क्वायर हो गया. और वो जो मैं पर्पल में हाईलाइट कर रहा हूँ उसका कितना होगा? 2y square. 2y square.
we're going to add all of these values together. Y square into 2 plus 2y square into 4. 4. शाबाश. इसको we're going to equate it to what value? 360. 360. So 2y square plus 8y square is equal to 360. Or if we solve this, what does it become? Y is equal to 6. Y is equal to 6. अब उन्होंने कहा था हाइट ऑफ द क्यूबॉइड. हाइट वाली वैल्यू कौन सी है? 2y. 2y. और y की वैल्यू हमारी आई है 6. तो y की जगह वी गोना प्लग इन 6 एंड दैट कम्स आउट टू बी 12. तो आपका आंसर यहाँ पे 12 है. वी हेडिंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट. इस लास्ट क्वेश्चन में वी सपोज टू फाइंड आउट द शेडेड पार्ट, एक एरिया, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Yes. ठीक है, कैसे करेंगे? लीड. Okay, so we can first find the total area. हाँ, Subtract the non-shaded regions to find the shaded region. ठीक है. टोटल एरिया कितना है? We have to find. तो टोटल एरिया फाइंड करने के लिए व्हाट शुड वी स्टार्ट ऑफ विद? They've given us the angle of the minor sector, which is 60, ओके, and the small circle radius is 3. ठीक है. लेट मी जूम इन, होल्ड ऑन, so that I can write these values. From here till here it's 3 and this is 60. अब And the large radius is 6. ये यहाँ से लेके यहाँ तक is 6. ओके, Yes. तो अब let's find out the area of the small sector first. ये वाला, तो we're gonna say 60 over 360 into pi r square, and this simplifies to 1 over 6. 1 over 6 pi into 9. So that's 9 over 6 pi. What other thing do we have to find now? I think we can And then jump off to this sector now. तो इसका एंगल होगा 300 बिकॉज 360 टोटल डिग्रीज होते हैं. तो अगर हम 300 वाला एंगल यूज़ करें तो हम सारा ये कैलकुलेट कर लेंगे, ये भी और साथ उसके ये भी इंक्लूड हो जाएगा. तो हमने ये इंक्लूड तो नहीं करना, तो हम बाद में इस पार्ट को इरेज करेंगे, बट फॉर नाउ इंक्लूड होगा. तो वो इंक्लूडेड पार्ट के साथ ही निकाल लेते हैं. 300 ओवर 360 इंटू पाई इंटू 6 का स्क्वायर. रिमेंबर 6 हमारा टोटल रेडियस था यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है. इफ़ यू यूज़ दैट, व्हाट आंसर डू वी एंड अप विद? ज़ीरोज़ कैंसिल कर लेते हैं. 6 5 आर 6 6 आर, तो 5 ओवर 6 इंटू 36 पाई. 6 1 आर 6 6 आर 30 पाई. 30 पाई हमारा कंप्लीट रेडियस वो आ गया है, एरिया ऑफ टू पार्ट्स. व्हाट पार्ट? दिस पार्ट and the white part included. Now we need to get rid of the white part. How will we do that? we can find the area of the smaller circle, Okay. subtract it from the I, first subtract the area of the small sector from the small circle, hmm. and then subtract it from the major sector area. So okay, so let's find out the area of the small so major sector AOB. Major sector AOB. और वो भी उसके अंदर मेजर सेक्टर से विद रेडियस 3, विद रेडियस 3, ताकि आपको पता हो कि हम ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक एरिया निकाल रहे हैं. ये वाला ग्रीन पार्ट जो मैं आप ग्रीन में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला. इसके इक्वेशन क्या बनेगी? 300 बिकॉज रिमेंबर एंगल वॉज 300 ओवर 360 इंटू पाई. और अब आर की वैल्यू हम यूज़ करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, विच इज़ 3. इज आर मेकिंग सेंस? Yes. So this is 3. So 3 का स्क्वायर. So once again इसको जब सिंप्लीफाई करो, that comes out to be 5 over 6 into 9 pi. तो 3 2s are 3 2s are 3 3s are, so that's 15 over 2 pi. तो बेसिकली equals to 7.5 pi. अब we have 3 वैल्यूज़. इनके साथ क्या करेंगे? जो वैल्यूज़ हैं मैं मार्क कर देता हूँ. We have 30 pi, we have 7.5 pi and 9 by 6 pi. 9 by 6 pi तो था हमारा ये पार्ट, ठीक है. प्लस वी हैव 30 pi विच वॉज दीज टू पार्ट्स कंबाइंड. अब इसमें से हमने ये वाइट वाला पार्ट माइनस करना है जिस पे अभी टिक लगाया है, तो वील डू माइनस 7.5 pi. 9 by 6 is 1.5 pi
प्लस 30 पाई माइनस 7.5 पाई। इनको अगर सॉल्व करो तो क्या आंसर आता है? 24 pi. 24. Let's add 1.5 plus 30 minus 7.5, 24 pi. And what's our answer? 24. 24.